Nemo that cured non-habit. That is, one cannot give what one does not possess. Simply speaking, this is a topic from the Act Sale of Goods Act. So, the Sale of Goods Act 1932 specifies the nitty-gritties of how to transfer the title of movable goods from the seller to the buyer. And that transfer of title from one party to another is what constitutes sales. And like any other normal contract, will require a consideration. At that consideration, unlike the Contract Act, has to be specifically in the form of the price. So, what we are here up to, that Sale of Goods Act, I can say, is a specified act to cover a special contract of sale for which the consideration is not just anything but price and involves the transfer of title, involves the transfer of title from one party known as the seller to another party known as the buyer. So obviously because the whole concept जो है वो dependent है कि transfer of title होना चाहिए, तो अगर आपके पास transfer ही नहीं है then how can you sell? तो दिस इज अ जनरलाइज्ड रूल कि सेल वही कर पाएगा जो गुड्स का ओनर है, यानी कि आप ओनर नहीं है तो गुड्स बेच ही नहीं पाएंगे, एंड गुड्स आर समथिंग विच आर मूवेबल, which are a part of your business and you normally deal in them either as a manufacturer or the trader. So ownership is one of the key constituent for every sale of goods contract, and therefore we have this rule that if you are not the owner then you cannot make a sell because you are not having something that you can transfer. So what we say that one cannot give what one does not possess. जो आपके पास है ही नहीं वो दोगे कहाँ से? तो अगर आप ओनर ही नहीं हो तो ट्रांसफर क्या करोगे? That is what is used in the Latin language as nemo dat cured non habet. But what we are here that this is the generalized law. There are certain exceptions or the conditions where even the title, if transferred by the person who is not actually the owner, but still it is deemed relevant and valid and will create a valid sale. So, as they say, that the rule generally accepted is that only the owner can transfer the property in the goods to the buyer. But there is an unconditional contract for the sale of the specified goods in a deliverable state, then the property in such ownership title is made. तो अगर आपके पास हक ही नहीं है तो आप बेचोगे कहाँ से? That is what generalize and that constitutes the basic essentials of every sale of goods contract. But what we are here up to, that we are here to discuss certain special circumstances, or we can say that they constitute the exceptions to this general rule of nemo dat cured non nabet. And I have underlined these seven specific circumstances or exceptions to underline our fact. And one or the first one is the most common one, okay, sale by the mercantile agent. Now, this is one of the most common thing. Why we are saying that? कि भाई एक पर्सन सारा माल खुद तो बेच नहीं पाएगा, वो अपने बिहाव पर अपने माल को बेचने के लिए अपने कुछ एजेंट्स अपॉइंट करता है. And as we have discussed in the contract of agency, the acts of the agent are deemed to be the acts of the principal until and unless they overrides the authority. And therefore, if as a principal I have to make a sale to my customer and I have authorized my agent to do this, then the sale made by the agent on behalf of the principal will also constitute a valid sale, and they will be equivalent, means the sale made by the agent on behalf of the principal will be deemed to be the sale made by the principal, and therefore the agent which was making this sale, which was transferring the ownership of the title, and but actually he was not the owner at the time the transfer was made because they rested with the principal. यानी कि जो एजेंट माल बेच रहा है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे माल बेच रहा है, प्रिंसिपल का माल बेच रहा है, तो ओनरशिप एजेंट की है ही नहीं, लेकिन तब भी क्योंकि एजेंट के पास अथॉरिटी है प्रिंसिपल के बिहाफ पर माल को बेचने की, दैट इज वाई दिस सेल
will stand valid and will not be unauthorized on behalf of the law, nemo det cured non nab. So we can say that here the buyer always get a good title because he has bought the goods in good faith and without having any doubt that the person who is transferring is not the valid agent of the principal. Now, second case, and I think that looks a common case because in most of the cases, the sale is made by the agents on behalf of the principal because there is a huge sales network to effectively contribute to this. So we can also say on the second way that sometimes the sale is made by a seller in possession after sale. थोड़ा सा लाइन को इंग्लिश को पढ़ना बहुत जरूरी है. सेल बाय अ सेलर यानी कि बेच कौन रहा है, बेचने वाला. सेल बाय अ सेलर इन पोजेशन आफ्टर अ सेल यानी कि सिंपल भाषा में क्या हो रहा है कि एक मिस्टर ए हैं जिन्होंने माल बेचा है, वो सेलर हैं, और एक मिस्टर वाई हैं जो बायर हैं. अब अगर ये बायर और सेल के बीच में सेल कंप्लीट हो गई तो सेल इज मोर अबाउट द ट्रांसफर ऑफ द टाइटल, but it also involves the transfer of possession. So it is not just the transfer of title, but it is also about the transfer of possession. So when the goods are transferred in ownership to the buyer, it will be effectively completed when also the buyer gets the possession. But sometimes it can happen कि भाई बिल तो कट गया. अब अगर सेल बिल कट गया तो ओनरशिप तो ट्रांसफर हो गई, लेकिन बायर ने कहा कि सर डिलीवरी भिजवा दीजिएगा, या मैं अभी आप अपने पास रख लीजिए, मैं आपसे एक दिन के बाद आकर डिलीवरी ले लूंगा. तो अभी वो गुड्स जो सेलर बेच चुका है वो उस दुकानदार के पास ही है, जबकि वो उसको बिलोंग नहीं करता क्योंकि बिल तो कट चुका है. अब इतने वो बायर आएगा, उस गुड्स की कस्टडी उस सेलर के पास है, एंड इफ ही हैज अ न्यू कस्टमर which is interested in taking the current delivery and is paying you cash. तो द सेलर में थिंक कि ये वाले गुड्स उस बायर के हैं लेकिन वो तो अभी कल या परसों लेके जाएगा, तो ये वाले गुड्स मैं इसको दे देता हूँ और मैं नए गुड्स मंगवा कर दूसरे इसको दे दूंगा. So what is happening कि the seller has made a sale of the goods which actually didn't belong to him because its title has already been transferred. बट दिस न्यू कस्टमर डजंट न्यू कि ये जो गुड्स हैं ये पहले बिक चुके हैं, उसने तो गुड फेथ में सेलर से ले लिए. तो अगर फ्यूचर में वो बायर उन गुड्स को क्लेम करे तो वो वैलिड नहीं होगा बिकॉज दिस कस्टमर हैज बॉट इन गुड फेथ विदाउट नोइंग द फैक्ट कि ये सेलर ये गुड्स आपको बेच चुका है, एंड देयरफॉर दिस सेल बाय द सेलर will stands good, and therefore this original buyer will have no right against this new customer, but he may sue the seller for any default if he wants to. So if you will see here, that is what is written. कि सेल कब एप्लीकेबल हुई कि सेलर इज इन पोजीशन ऑफ द गुड्स और द डॉक्यूमेंट और टाइटल, और बंदे ने अभी बिना कुछ काम करे यानी कि नए 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 कस्टमर ने बिना प्रीवियस नॉलेज के अपना गुड्स परचेज कर लिए, तो ये जो सेल है ये वैलिड सेल मानी जाएगी. ये एक वैलिड सेल मानी जाएगी. दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. तो आप एक बार प्लीज दोनों को पढ़ लीजिए बिकॉज ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सर्कमस्टांसेस हैं. देन वी विल मूव ऑन टू द फर्दर क्लॉजेस because once you read this is law, only once you read then you realize that how important this is to understand कि इंग्लिश की क्लैरिटी लॉ को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है. सो इफ आई मूव ऑन टू द थर्ड केस, यहाँ इस वाले केस से बिल्कुल उल्टा हो गया कि बायर के पास गुड्स आ गए पहले लेकिन बिल कटा नहीं. यानी कि मैं इसको इस तरह लेके चलूं कि सेलर है, अभी सेलर बना नहीं है, बायर है, अभी बायर बना नहीं. यानी कि इनके बीच में एग्रीमेंट टू सेल है लेकिन अभी ओनरशिप का डॉक्यूमेंट ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन ट्रांसफर ऑफ पोजेशन हो गया. अब ट्रांसफर ऑफ पोजेशन तो हो गया, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ टाइटल हुआ था, पोजेशन नहीं हुआ था. ये ट्रांसफर ऑफ पोजेशन है लेकिन ट्रांसफर ऑफ टाइटल नहीं हुआ. तो टेक्निकली बी इज नॉट द ओनर बट ही हैज द पोजेशन. और एग्जाम्पल के तौर पे ये ट्रेडर वन है, ये ट्रेडर टू है. ट्रेडर टू ट्रेडर वन से लेके अपने कस्टमर को माल बेचता है. अब जब ये कस्टमर इसके पास माल लेने आया, इसने यहाँ से माल मंगा लिया और कहा सर बिल बाद में भेज देना. तो अभी भी ओनर नहीं है लेकिन पोजेशन आ गया और उसने अपने कस्टमर को माल बेच दिया.
कस्टमर को नहीं पता था, कस्टमर वॉज इन गुड फेथ बाइंग द गुड्स फ्रॉम द बी एंड वॉज नॉट नोन ऑफ द फैक्ट कि अभी बिल नहीं कटा या सेल के पास बी के पास ओनरशिप नहीं आई है। तो दिस स्टैंड्स वैलिड सेल because here B is presumed to be having the ownership of the goods because he is having the possession, and therefore in such a case though B was not the owner, यानी सिंपल भाषा में शायद बिल यहां से यहां तो कट गया 20 जून को और ये वाला बिल कटा 21 जून को। तो जिस दिन आपने 20 जून को माल बेचा उस दिन आप ओनर थे ही नहीं, लेकिन तब भी उसे एक वैलिड सेल माना गया। और यहाँ ये बात इंपॉर्टेंट है कि नए बायर को पुरानी कोई नॉलेज नहीं थी या इस डिफॉल्ट की कोई नॉलेज नहीं थी, एंड दैट विल नॉट अफेक्ट द बाइंग राइट्स ऑफ द न्यू कस्टमर है। On the same lines, if we see here that this is under a specific provisions of the act, यहाँ पर act के कुछ specific provisions हैं which allow the sale by the non-owners, जैसे कि ऑफिशियल रिसीवर ऑफ द कंपनी, कंपनी लिक्विडेशन में चली गई, कंपनी का लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया, वो कंपनी के सारे एसेट्स को बेचेगा, पैसा आएगा और कंपनी के सारे डेब्ट्स को सेटल करेगा। दैट इज हाउ कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडेशन वर्क्स। तो यहाँ जो लिक्विडेटर कोड का अपॉइंटेड है वो कंपनी के असेट्स बेच रहा है। तो इफेक्टिवली से असेट्स बिलोंग टू द कंपनी बट दे हैव बीन सोल्ड बाय द लिक्विडेटर हु इज नॉट द ओनर but actually still allowed to sell the goods, and therefore the people who are buying such goods from such a liquidator will stand a valid ownership though the sale was made by the non-owner. Similarly, अगर किसी फाइंडर को यानी कि कुछ गुड्स खो गए और वो किसी को मिल गए, ठीक है, अब आपको कोई रोड पे पड़ा हुआ चीज मिला, आपने उसकी ओनरशिप को ट्रैक करने की पूरी कोशिश करी और वो ओनरशिप ट्रैक नहीं हुई और आपने वो गुड्स को अपना समझ के किसी और को बेच दिया। अब वो ओरिजिनल ओनर जिसके वो गुड्स खोए हैं उसका कोई भी हक होगा तो वो आपके अगेंस्ट होगा। लेकिन जो आप जिसने आपको सॉरी जिसने आपसे खरीदे, इट डजंट नो ऑफ द फैक्ट कि आपने ये कहाँ से लिए, उसे नहीं पता था कि ये फाइंडर हो आप, उसे ये नहीं पता था कि आपने गुड्स खोए हुए बेच रहे हो, उसे ये नहीं पता था कि आप गुड्स के ओनर नहीं हो। तो दैट ओनरशिप विल नॉट बी अफेक्टेड अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, बिकॉज इन सर्टेन केसेस, इन सच केसेस, जैसे कोई कोई बंदा कहे जी चोरी की गाड़ी बेच दी और मुझे पड़ी हुई मिली थी, तो इन दैट केस दैट विल नॉट होल्ड ट्रू व्हाट आई एम सेइंग। तो इट मींस यहाँ पर सर्कमस्टांसेस इंपॉर्टेंट है कि कुछ सर्कमस्टांस में ये वाली क्लॉज एप्लीकेबल होगी और कुछ वाले केस में एप्लीकेबल नहीं। सिमिलरली सेल अंडर अ मार्केट ओवर, यानी कि जो एक सिंपल भाषा में एक प्रॉपर मार्केट प्लेस है, या ये कहिए कि आप एक शॉप खोल के बैठे हो। अब मैं अगर कस्टमर हूं और उस शॉप के ऊपर कुछ बाल खरीदने आ रहा हूं तो मैं ये समझूंगा कि जो भी माल आप उस दुकान पे बेच रहे हो वो आपका है, आपने उसको खरीदा हुआ है। मुझे नहीं पता था कि आप चोरी का माल बेचते हो, मुझे नहीं पता था कि आपने अभी तक माल परचेज नहीं किया है, सिर्फ पोजेशन ले रखा है। इट डजंट मेक अ डिफरेंस बिकॉज यू आर रनिंग अ शॉप, बिकॉज यू आर गिविंग मी द सेल बिल, so I am presumed to know or I am presumed to believe that you are the valid owner of the goods irrespective of the fact whether you were or not, and hence even if you are not the owner, if you make certain sale, then I will have a good title because I bought the goods in good faith and without any knowledge of any bad deeds on your part. सो देयर फॉर हम सिंपल भाषा में कहते हैं कि भाई मोबाइल फोन खरीदा है तो उसका बिल होना चाहिए। अगर आपके पास उसका बिल है तो एक प्रॉपर मार्केट ओवर्ट से माल बेचा गया है और उसके कारण से जो बायर है उसकी ओनरशिप राइट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर। दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट कि आप हर जो माल खरीद रहे हैं उसका एक बिल लें। बिल वही देगा जो एक रिकॉग्नाइज प्लेस है, जिसके पास बिल देने के लिए नहीं है वो एक रिकॉग्नाइज बिजनेस प्लेस नहीं है। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में गफ्फार मार्केट से कुछ सामान खरीद रहे हैं तो वो शायद आपको बिल नहीं दे रहे। तो इसलिए लोग कहते हैं कि गफ्फार मार्केट के अंदर कुछ इस तरह के माल मिलते हैं जिनकी ओनरशिप में डाउट है। अब मुझे नहीं पता कि वो सही है गलत है, बट गफ्फार मार्केट में ऐसे शॉपकीपर भी हैं जो आपको बिल पे कर रहे हैं। या इग्नोर द वर्ड गफ्फार मार्केट, जो भी इस तरह की आप ग्रे मार्केट समझते हैं, जहां से आपको बिल मिल रहा है वो एक रिकॉग्नाइज मार्केट प्लेस है और वो एक आपको वैलिड ओनरशिप या वैलिड टाइटल देता है, बिकॉज दैट will be covered by the exceptions of the rule nemo det cured non nabit, and hence even if the seller was not the owner, but that will not affect your ownership. On the same lines,
सेल बाय अ प्लेजी। ठीक है, मैं दोबारा एक बार वो लाइन पढ़ दूं क्योंकि ये फिफ्थ पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दिस फर्स्ट वन इज रियली इंपॉर्टेंट, दिस सेकंड वन इज रियली इंपॉर्टेंट, दिस लिक्विडेटर वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस मार्केट ओवर। तो ये एक चार ऐसे केसेस हैं जो बहुत प्रेवलेंट हैं इस मार्केट में। तो मैं दोबारा एक बार रीड कर देता हूँ दैट एनी गुड्स परचेज फ्रॉम द मार्केट ओवर always convey a good title to the buyer irrespective of the seller's title। सो हम ये कहते हैं कि आप अगर अच्छी जगह से माल खरीद रहे हैं, बिना किसी ग्रे शॉप के माल अगर खरीद रहे हैं, तो आपके पास ओनरशिप में कोई इश्यू नहीं आएगा। इसलिए हम लोग जब ऑन सेकेंड हैंड कार खरीदते हैं तो जितनी ये ऐप आ रही हैं, कार ट्रेड, कार 24, जिफी, वॉट एवर दे एप्स आर, दे आर बेसिकली reorganize market overt, and hence you are presumed to have a good title irrespective of any default in the title of the transfer। Similarly, if I come to this concept is sale by a pledgee। now pledgee we all understand कि आपने अपने गुड्स की ओनरशिप किसी और के फेवर में प्लेज कर दी, और वो ओनरशिप आपके पास वापस कब आएगी, जब आप वो कंडीशन सेटिस्फाई कर दो। तो आपने ओनरशिप उसके नाम पे ट्रांसफर नहीं करी है, वो ओनरशिप उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी अगर आप उन कंडीशन को डिसोबे करेंगे। यानी कि आपने लोन लिया और मकान गिरवी रखवाया, तो ये एक प्लेज हुआ। अब अगर आपने टाइम पे प्रिंसिपल रिपे नहीं किया, यानी कि कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, देन द पर्सन हु वाज गिवन द पोजीशन नोन एज अ प्लेजी will have the right to sell the goods and recover his money even though he was not the owner, and therefore the pledgee, though not the owner, because the goods pledged belongs to the original pledger, but because he has not fulfilled the right, or sorry, the conditions, therefore pledgee acquires the right to sell the goods and transfer the ownership to the third person, even though he is not the owner, and that is why it is covered under this exception of nemo debt cured non-nabit. That is why we say that the sale by the pledgee after a reasonable notice has been given to the pledger। It means जहां प्लेजी के पास हक क्रिएट हुआ, यानी कि जैसे ही प्लेजर ने कंडीशंस पे डिफॉल्ट किया, तो प्लेजी का राइट टू सेल अक्वायर हुआ, बट बिफोर ही एनफोर्सेस सच राइट टू सेल, he shall give a due notice to the pledger that because you have defaulted on your terms of pledge, therefore I am now in the process of selling the goods। तो either fulfill the condition, या सिंपल भाषा में आइए पैसे वापस कर दीजिए, अपने गुड्स जो प्लेज हैं वापस ले जाइए, और अगर आपने उस नोटिस पीरियड के अंदर उसे सेटिस्फाई नहीं किया, देन द प्लेजी कैन सेल। सो द क्रूशियल पॉइंट इज दैट दो प्लेजी acquires the right to sell once the pledger defaults, but still there should be a notice with a reasonable time to be served by the pledgee to the pledger so that he can free the goods from the pledge and get the goods back। And if even after giving a due notice to revoke the condition of the ownership, और आई कैन से कि एक ड्यू नोटिस के बाद भी अगर प्लेजर ने अपना प्लेज रिलीज नहीं करवाया, गुड्स रिलीज नहीं करवाए, पेमेंट्स फुलफिल नहीं करी, देन प्लेजी acquires the right to sell the goods even though he is not the owner। And last and not the least, and that will constitute a special topic to be discussed in sessions to come, कि आपने गुड्स एज ए सेलर बेच तो दिए, यानी कि एज ए सेलर आपने अपने गुड्स बायर को बेच तो दिए, ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, पोजेशन ट्रांसफर कर दिया, बट ये ट्रांसफर क्रेडिट पे हुआ था। ठीक है, तो सेलर, द पर्सन हु हैज मेड द गुड्स, और so he has who has made this sale wants the consideration of price, और अगर वो उसे पैसे नहीं मिले, then he becomes the unpaid seller। तो द क्रूशियल राइट इज कि अगर इस गुड्स की ओनरशिप के साथ साथ पोजेशन बायर के पास पहुंच गया, तो सेलर बायर से जाके छीन नहीं सकता। अब अगर उसे पैसे नहीं मिले, देन ही कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड sue द बायर, नॉट जस्ट फॉर द प्राइस बट आल्सो फॉर द डैमेजेस। लेकिन अगर इस अनपेड सेलर ने गुड्स का पोजेशन देने से पहले पैसे नहीं मिलने के कारण
पोजेशन देना रोक दिया। यानी कि अगर गुड्स का पोजेशन दिया ही नहीं था, बिल तो काट दिया और कहा पैसे दे जाओ, माल ले जाओ। तो बिल कट गया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, बायर बिकम्स द ओनर, बट पैसे आएंगे तो पोजेशन जाएगा। और पोजेशन लेने वो आया नहीं क्योंकि उसने पैसे भेजे नहीं। तो आपके पास शायद गुड्स पड़े हुए हैं जिनका पोजेशन आपके पास है लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं है। तो सॉरी, ओनरशिप आपके पास नहीं है क्योंकि आप ट्रांसफर कर चुके हो, बट आप एक अनपेड सेलर हो और गुड्स आपने भेज दिए थे, पैसे आने थे लेकिन पैसे नहीं आए, तो आपने गुड्स बायर के पास पहुंचने से पहले ही वापस मंगवा लिए। बोथ वेज यू acquired the ownership, but I should say in both the case you acquire the possession but not the ownership because the bill has already been raised। तो सिंपल भाषा में आपके पास ऐसे गुड्स का पोजेशन है जिनका बिल काट चुके हो लेकिन आपको पैसे नहीं मिले। तो you as an unpaid seller has the right to sell certain to sell such goods to other party though you are not the owner still, and that constitutes few examples where this clause of nemo dat cured non nabit becomes ineffective, and as an exception even a non-owner can sell the goods. Thank you.